The topic for now is production possibility curve, and production possibility curve is a graph which shows different combinations of two products that can be produced with the help of given resources. And this graph has multiple other names as well. We also denote production possibility curve as PPC. We also denote production possibility curve as PPF, mean production possibility frontier, or production possibility boundary, or opportunity cost curve. OCC stand for opportunity cost curve and TC stand for transformation curve. So production possibility curve has multiple 5 names. An examiner may use any one of these. While we draw production possibility curve, we assume some points. And number one assumption is we consider only two goods. Because while we draw graph, we can label only two axes. One is X and the other one is Y. So we can only plot two goods, X and Y good. So this graph assumes that there must be only two goods. And the second assumption is state of technology must remain constant. What does this mean? It means the technology we already have, we must be relying on that technology. We cannot increase or we cannot change the technology. This is also assumed while drawing PPC curve. And the other is quantity and quality of other resources is also kept constant. Other resources include land, labor, and machinery or technology or capital. And we also assume that all other factors must be, the quantity and quality of all other factors must remain the same. And the other assumption we take into account is resources are fully employed. When resources are fully employed, it means we cannot increase the production of one good without reducing the production of another good. For example, if we have fixed budget to produce two electronic products, one is, let's say, fan and the other one is tube lights. And if we produce more tube lights, then we will have to reduce some quantity of fans. Now we can draw production possibility curve. It looks like this. We have to draw axis and we show two different goods on X and Y axis. For example, on X axis we have, let's say, fans, and on Y this is origin point, and then on Y axis we have, let's say, light bulbs. If we have to produce these two different goods with limited resources, then uh, let's see how we can allocate our resources to produce these two goods. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो शेप है वो जनरली इट लुक्स लाइक दिस, और ये हमारी बाउंड्री को शो करता है कि हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज की बाउंड्री क्या है. मींस ये जो कॉनकेव लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये शो करती है कि मैक्सिमम आप प्रोडक्शन यहाँ तक कर सकते हैं, इस लाइन तक कर सकते हैं. लेट्स से पॉइंट ए तक कर सकते हैं, पॉइंट बी तक कर सकते हैं, और या फिर पॉइंट सी तक कर सकते हैं, या फिर आप पॉइंट डी, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं पॉइंट ई पे. You can produce within these boundaries, but you cannot produce beyond this boundary. Let's say this is point F, so you cannot go beyond the boundary of resources to F point because your boundary of resources is maximum limited to curve DE. अब हम देख सकते हैं कि अगर प्रोड्यूसर अपने सारे रिसोर्सेज फैंस बनाने पे लगा दे तो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकता है. लेट्स से वो 100 फैंस प्रोड्यूस कर सकता है बाय यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ हिज रिसोर्सेज ऑन प्रोड्यूसिंग फैन. लेकिन अगर वो फैंस पे सारे रिसोर्सेज लगा देगा तो टेक्निकली आपको पता है कि फिर उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे बल्ब्स बनाने के लिए. सो बल्ब्स की प्रोडक्शन उसके अगेंस्ट जीरो हो जाएगी. और दूसरी तरफ अगर वो सारे के सारे बल्ब्स बनाने पे लगा दे तो वो मैक्सिमम 1000 लाइट बल्ब्स बना सकते हैं उन्हीं रिसोर्सेज के साथ. लेकिन अगेन अगर वो 1000 लाइट बल्ब्स बनाएगा तो इसके अगेंस्ट उसकी फैंस की प्रोडक्शन जीरो हो जाएगी. अब वो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर वो फैंस 100 फैंस बना लेगा तो 1000 लाइट बल्ब्स उसे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे जो कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. और अगर 1000 बल्ब्स बना लेगा तो 100 फैंस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि 100 फैंस अब उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसी एक चीज पे लगा दे. ही कैन
allocate sum of resources to produce fans and sum of resources to produce light bulbs. Let's say he opts for combination A. If he opts for combination A, then it means he can produce some quantity of light bulbs. Let's say he can produce 900 light bulbs, and at the same time he can also produce some fans as well. Let's say he can produce 90 fans. अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फैंस बनाना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है लाइट बल्ब्स की निस्बत, तो वो क्या करेगा? he will move from point A to B, and when he will move from point A to B, he has to reduce production of light bulbs, but now he can produce greater quantity of fans, let's say 95 fans. तो फैन की प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई लेकिन लाइट बल्ब्स की प्रोडक्शन कम हुई. अब 90 से 95 तक जो एक्स्ट्रा फैंस उसने बनाए, 5 फैंस एक्स्ट्रा बनाए, उसके लिए उसे 100 लाइट बल्ब सेक्रीफाइस करना पड़े. सो 100 लाइट बल्ब्स विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इस तरह से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं. अब अगर उसे ये फील होता है कि लाइट बल्ब्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो लाइट बल्ब्स को प्रोड्यूस करने का ज्यादा बेनिफिट है, देन ही विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू सी. अब ए टू सी जब वो जाएगा तो इट मींस उसने लाइट बल्ब्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, 950 लेट से कर दिया, और बट ही विल हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ fans, and now he can, let's say, produce 80 fans. So this is how he can change his combinations. और अब लाइट बल्ब्स उसने ज्यादा बनाए लेकिन फैंस की प्रोडक्शन उसकी कम हो गई. अच्छा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो दो गुड्स हैं, फैंस एंड लाइट बल्ब, लाजमी नहीं है कि फैंस एंड लाइट बल्ब आप लिखेंगे, आप कोई भी दो प्रोडक्ट्स को कंसीडर करेंगे. लेट्स से कि आप एक तरफ कार्स ले लेते हैं और दूसरी तरफ आप रेफ्रिजरेटर्स ले लेते हैं, तो ऑप्शन है प्रोड्यूसर के पास जो दो गुड्स उसने बनानी है, वो दो गुड्स हम एक्स और वाई पे लेबल कर देंगे और फिर देखेंगे कि रिसोर्सेज को वो कैसे एलोकेट कर सकते हैं. अच्छा, इसके बारे में कई दफा क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द टू कॉन्सेप्ट्स व्हिच कैन बी इलैबोरेटेड विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. टू माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स अगर पूछता है तो क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन करेंगे. प्रोडक्शन, वहां पे आप नंबरिंग नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पे आप समझने के लिए देख लें. नंबर 1 इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नंबर 2 इज लेट्स से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, स्केर्सिटी को ये इसलिए शो करता है बिकॉज इट शोज अ लिमिटेड बाउंड्री. दिस इज द लिमिटेड बाउंड्री जिसे हम डी ई का नाम दे रहे हैं. ये जो ग्राफ है ये एक बाउंड्री आपकी रिसोर्सेज की, आप मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं. एंड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो दिस इज द लिमिटेड बाउंड्री ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, यू कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड दिस बाउंड्री. अब क्या होगा कि पहला कॉन्सेप्ट है कि ये स्केर्सिटी को शो करता है. स्केर्सिटी को आप डिफाइन करेंगे, यू कैन एक्सप्लेन दैट स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, and limited resources refer to land, labor, capital and enterprise, the four factors of production. Land is a natural resource which is also limited in supply and it has also boundary. Next is labor. Labor is also limited in supply, and capital and technology and machinery is also limited in supply. So all resources are limited supply. So the concept of scarcity can be explained with production possibility curve. This boundary exactly shows scarcity of resources. दूसरा कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें एक्सप्लेन करता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे शो करता है? व्हेन वी चूज वन थिंग वी हैव टू सैक्रिफाइस अदर थिंग, व्हेन वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग वी हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग, एंड व्हेन वी आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग इट मींस वी आर फेसिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो जैसे आप यहाँ कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ जब आप गए थे तो आपने कैपिटल या एक्स गुड की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था लेकिन वाई गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ा था. सो वाई गुड की जितनी प्रोडक्शन आपने कम की वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. सो द टू मेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्लूड scarcity of resources and number 2 is opportunity cost.